में गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुल प्रसाद उपाध्याय तेजपुर विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उपस्थित आप सभी को सादर अभिवादन, नमस्कार। हमारे बीच आज 73वें गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर विनोद कुमार जैन जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं प्रोफेसर जैन से अनुरोध करूंगा कि कृपया आज के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय यह तिरंगा झंडा फहराकर कृतार्थ करें। सर प्लीज। राष्ट्र जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जयगाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रेम विश्व। इसी तरह गणतंत्र दिवस हम बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं, मगर आप सभी को पता है कि जिस रौनक, जिस धूमधाम के माहौल के साथ हम यह मनाना चाहते थे, विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हम भले ही उतनी धूमधाम से इस वर्ष उसका उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हमारे दिल में देशभक्ति की ललक, हमारे दिल में भारत के प्रति प्रेम में शायद कोई कमी नहीं है। कोरोना नामक इस महामारी के चलते जो विभिन्न आकार में अपने रूपों में परिवर्तन करता हुआ बार बार हमें बाधित कर रहा है इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने से, और सरकार के नियमानुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मजबूरन हम इस तरह छोटे से पैमाने पर ही सही यह आयोजन कर पा रहे हैं। मैं हमारे कुलपति महोदय से पुनः अनुरोध करूंगा कि सर आज के इस पावन अवसर पर इस पुनीत उपलक्ष्य में दो शब्द कहकर उपस्थित लोगों को संबोधित करें। सर प्लीज। Honorable Prof. Vice Chancellor, Prof. Chancellor, the esteemed Deans, Dr. Das, the Registrar, the other officials of the university, the faculty members, the students, and the Home Guard contingent, ladies and gentlemen. First, let me extend a very warm welcome to all of you on this pious occasion, and also greet you on the occasion of this 73rd Republic Day
celebrations. As you are all aware that on this day in 1949, the Indian Constituent Assembly adopted the Indian Constitution, and a year later, in 1950, India became a democratic, socialist, sovereign republic with justice, equality, liberty and fraternity ingrained in our constitution. It is also a day when we pay our homage and tribute to all the freedom fighters who laid down their lives for the cause of this country. And it is also a day to express our sincere gratitude to the countless farmers, the labor, the scientists, the educators, the professionals, the entrepreneurs, the industry people, and all of us who have contributed to the progress of this great country of ours. As you are all aware that this year the central government, in a very befitting tribute to the legacy of Netaji Subhash Chandra Bose, they have decided to install a statue at Rajpath in the capital of the country. Friends, as you are aware that during the last 70 years, in fact, some of you would attest to the fact that during these 7 decades or so, against all the adverse circumstances and the headwinds of wars, the food shortage, the corruption, the terrorism, and what have you, the governance deficit, and the COVID-19 of recent times. Despite all this, our countrymen have shown remarkable resilience and have risen to the challenge of the developmental imperatives which the country badly requires. Just to give you some data as to what progress we have made over the years. Today, our food production is in excess of 300 million tons. And at the time of independence, way back in 1947, it used to be only 5 million tons. So that is the progress we have made as far as the food situation is concerned. Our GDP way back in 1947 used to be 3% of the world economy. Today it is close to 9 to 10%. And in dollar terms, it is in excess of $2 trillion. And in fact, the government has set a target of $5 trillion, as you all know. If you look at the energy sector, we were somewhere close to few gigawatt of energy in terms of the energy production, electricity production. Today it is close to 400 gigawatts. A few gigawatts either way, but close to 400 gigawatts, and out of that, some 37 to 40% of your energy is being met through the renewable energy sources. So these are some very, very flattering statistics. Your poverty, I'm talking about below poverty line data. As of now, it is 22%. At the time of independence, it is used to be 70%. So these are some of the staggering figures, and the country should be rightly very proud of. Today, the country can also take some satisfaction out of the fact that, given the enabling policies of the government, today we have something like 90 unicorns in the country. And in fact,
During the last couple of years, some 40 or nearly 50% of these unicorns have come during the last 2 years. Some $42 billion of investment has come for these startups. Today, some 60,000 startups are functioning in the country, and we are the third largest ecosystem as far as these startups are concerned. Now, this augurs very well for the future of the country and for realizing this goal of self-reliant India. But we must also not be very complacent and just feel very proud of what we have achieved, because there is so much to do still. And if you just look at the SDG index, today we are ranked 120th out of 165 nations. Now, this is not something which we can be very proud of, which means that on a host of socio-economic parameters, whether it's infrastructure, whether it is economic well-being, or the basic necessities like clean drinking water or clean sanitation, affordable energy, and all that, I think that a lot more work has to be done. I mean, this is for the central government and the state governments to see to it that the country moves in the right direction, and some of these targets which the government has set under various missions, whether it is the nano mission, or hydrogen mission, water mission, and solar mission, and what have you, I think it's for the governments to deliver, the bureaucracy for them to deliver. But as an institution in the field of higher education, our job is also very much cut out. To begin with, we have to see to it that our academic programs are outcome-based, that we are able to give the requisite skill sets in some of these emerging areas: artificial intelligence, machine learning, quantum technology, nanotechnology, health and well-being, energy. In all these areas, there is so much to be done in the country, because the government wants the human resource with the requisite skill sets to come out of the higher educational institutions. And that's why these structural changes in the higher education system are being implemented. The Prime Minister keeps talking about the necessity of people to dream big, to ideate. And in fact, if I were to quote him, he says that he wants India to be an innovation republic. Now, because there is so much opportunity, to come up with affordable, economic, cost-effective, local, indigenous solutions. And that's why he has been emphasizing the importance of innovations, the startup culture in the country, and that has to come from higher educational institutions, from the people who get their various degrees, whether in engineering or in some other professional courses. So, as I said, we have a huge responsibility as a higher educational institution to deliver on some of these requirements for the country, or the goals of the country. And friends, as the country is, as you know, is celebrating the 75 years of Azadi Ka Mahotsav in the form of Azadi Ka Mahotsav. And through these celebrations, we are being reminded of our huge historical legacy, our proud cultural and traditional heritage. But at the same time, we should not lose sight of the fact what in fact Vivekananda said. He said that India has to rise from the peasants grasping the plough,
from the labor, from the huts, from the cobbler, from the sweeper. So I think all the sections of our society have to have this benefit which would accrue as a result of India's progress. So this we must not forget, that every person who has been left behind in the developmental trajectory of the country has to get his due or her due. So with these words, I greet you once again, and thank you for coming to this function in large numbers, despite the fact that we have to observe the COVID protocol and the weather is not so conducive right now. So thank you so much and for listening to me. Thank you. धन्यवाद सर, आपके इस उत्साहवर्धक शब्दों के लिए, संबोधन के लिए। कोविड महामारी के इन परिस्थितियों के कारण हम यह कार्यक्रम बहुत ही सीमित ढंग से कर पा रहे हैं और हम आज अन्य कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार कुछ ऑनलाइन प्रतियोगिताएं हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और स्कूली बच्चों के लिए आयोजित किए गए थे स्पोर्ट्स ऑफिस की ओर से। मैं उनके परिणामों की घोषणा यहाँ करने जा रहा हूँ। हालांकि स्थितियाँ ऐसी है कि हम आपको यहाँ बुलाकर प्राइज भी नहीं दे सकते अभी। आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि आप कल के बाद कभी भी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स स्पोर्ट्स ऑफिस में जाकर आप अपने प्राइजेस ग्रहण कर सकेंगे। द रिजल्ट्स ऑफ ऐसे कॉम्पिटिशंस which were held for university students. First prize, Diksha Datta, Civil Engineering. Her topic was Actions at 75. Second prize, Anisha Kar, Department of Chemical Sciences. Her topic was Atmanirbhar Bharat. Third prize, Abhinav Hazarika, Department of Chemical Sciences, and the topic was the freedom struggle. इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए क्राफ्ट प्रोजेक्ट ये भी ऑनलाइन ही आयोजित की गई थी प्रतियोगिता। इसमें 3 पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं। प्रथम सौहृद कीर्तनिया, द्वितीय आद्रिका दत्त और तृतीय मिराया मानिक। आप सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और स्कूली बच्चों के पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप कृपया ये प्राइजेस स्पोर्ट्स ऑफिस से कलेक्ट कर लें। धन्यवाद। इसके अलावा आज और एक योजना यह थी कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष सितंबर के माह में हिंदी पखवाड़ा आयोजित करते हैं। आज हमने यह योजना बनाई थी कि आज छोटा सा एक गैदरिंग होगा और इसी दौरान हम बच्चों को बुलाकर उनके प्राइजेस भी देंगे, लेकिन वह भी हम नहीं कर सके। मैं केवल बच्चों के नामों की घोषणा कर दूंगा और उनके पेरेंट्स से अनुरोध रहेगा कि आप कृपया हमारे कार्यालय में आकर इनके प्राइजेस, मेमेंटोज और प्रमाण पत्र ग्रहण कर लें। यह प्रतियोगिता सितंबर 2021 में हिंदी पखवाड़ा के दौरान कविता आवृत्ति प्रतियोगिता आयोजित की गई थी बच्चों के लिए। इसमें हमने बच्चों को कहा था कि आप घर में ही कविता के वीडियोस बनाइए और हमारे पास वीडियोस भेजिए, और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि कुल 39
वीडियोस हमारे पास आए थे, 39 वीडियोस, जिसको हमने 2 भागों में, 2 श्रेणियों में रखा। क्लास अप टू क्लास 4, मतलब LKG टू क्लास 4 एंड 5 एंड अबव। कैटेगरी 1 नर्सरी टू क्लास 4 में प्रथम स्थान है दर्शिता शर्मा, क्लास 1। सेकेंड स्थान में 2 लोगों का नाम है, कुहाना नाथ और सोहिद कीर्तनिया। थर्ड प्राइज में भी 2 नाम है, आदिश्री नाथ और आयुषी कार्की। कैटेगरी 2 क्लास 5 एंड अबव, प्रथम स्थान दिशिता बोरा, द्वितीय स्थान फेलिसा नाथ और तृतीय स्थान धैर्य शर्मा। एक स्पेशल जूरी प्राइज भी है। हम यह वीडियोस के निर्णायक मंडलियों में 2 हमारे फैकल्टी मेंबर्स थे, डॉक्टर अनन्या बनजोत्सना और डॉक्टर स्थर दैमारी। मैं इस मौके पर उन दोनों को धन्यवाद ज्ञापन भी करना चाहूँगा। उन्होंने एक स्पेशल जूरी प्राइज भी घोषणा करके मेरे पास भेजा है। उनका नाम है डॉक्टर अनन्या गोगोई भुइया, LKG। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया अपने प्राइजेस पेरेंट्स आकर के हमारे कार्यालय से कलेक्ट कर लें। कल के बाद आप कभी भी आ सकते हैं। रिमेनिंग 30 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स, आप सभी के लिए यह खबर मैं देना चाहूँगा कि आप सभी के लिए मेमेंटोज और सर्टिफिकेट्स बनाए गए हैं टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आप सब भी कार्यालय में आकर के अपना मेमेंटो और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। मैं बाकी 30 जो विद्यार्थी हैं उनका भी नाम आप सबको सुना देना चाहूँगा। अभिज्ञान काकती, आयशा नूर, अमया हजरिका, अनंत गोगोई भुइया, अनुकृति, अपराजिता हजरिका, आर्यबाह नूर, बाग्मिता कलिता, देवम कौशिक, देवाश्रुति कौशिक, हवीश शर्मा, ज्योतिष्मान बोरा, कृषांग नाथ, मानस्वी दास, नमन शर्मा, नम्रता बोरा, राजरितम हजरिका, सान्वी शर्मा, समीरन दले, सान्वी दास, सृजन प्रयास बोरा, सृजना देवी। और क्लास 5 एंड अबव में है अनन्या नाथ, आरुष श्रीवास्तवा, चैताली दास, दिशिता बोरा का तो प्राइज मिल गया है पहली, हर्षिता कलिता, कर्मिष्ठा बरुआ, निशिता शर्मा, परिणीता काकती, उनसंग पेगू और संजोली सीट। ये हमारे टोटल पार्टिसिपेंट्स 39 थे, जिनमें से 9 को प्राइज मिला है और बाकी 30 को हम स्पेशल मेमेंटोज और पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः धन्यवाद। जजेस को मैं विशेष धन्यवाद कहना चाहूँगा इस मौके पर। और आज का यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त घोषित किया जाता है। आप सभी के लिए लघु आहार की व्यवस्था की गई है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लघु आहार ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।